Hello students, hope you all are doing good. So here I'm Gayatri Pawar, Assistant Professor TPA in St. Andrews Institute of Technology and Management. So guys, today I'm going to start an online lecture series on HRM subject. So let's start with lecture. First of all, just go through your syllabus. This is your syllabus content. See, in first unit you have introduction, nature and scope of human resource management, HRM objectives and functions, HRM policy. Then HRM in globally competitive environments, strategic human resource management, HR outsourcing, KPO and BPO. Acquiring human resource planning, job analysis, job design, employees involvement, flexible work schedule, recruitment, selecting, human resource placement, inductions and right sizing, developing human resource, employees training, need assessment, training methods and evaluations, cross-cultural training, designing executive development program, techniques of executive development, career planning and development, employees, retention, succession and planning, and enhancing the rewarding performance, establishing the performance management system, establish reward and play plans, employees benefits, ensuring a safe and healthy work environment, and balance scorecard and competency based HR. So this is the syllabus content, and your syllabus is divided in 4 units as you all know. So this is about your whole syllabus. Now in today's lecture we are going to start. We will discuss the what is the HRM, meaning of HRM, nature and scopes of HRM, and HRM objective. Okay, we will discuss these 3 topics in today's lecture. Okay, so let's start the lecture. Yes. So first of all, human resource management. So human resource management is basically a combination of 2 words. First word is human resource and second is management. So what do you mean by human resource? So human resource of an organization consists of all the people who perform the activities, its activities. So if we talk about human resources, so human resources basically are the people who are performing or who perform its activities within the organization or outside organization at the same time. So human resource, the persons whoever are working in the organization and working for the organization will be known as human resources. So basically, when human resources की बात करते हैं, human resources मतलब person. They're talking about the persons who are doing job or who are working for the organization. Okay. Then these people will be known as human resources of that organization. That is, manpower is only resources doesn't depreciate with the passage of time. So there is in an organization there is n number of resources, and the manpower is the only resource who does not depreciate with the passage of time. Depreciate means जिनकी वैल्यू कम नहीं होती, ऐसे resources जिनकी वैल्यू depreciate नहीं होती है, with the passage of time reduce नहीं होती. So human resource management जो है उनकी जो वैल्यू है वो डे बाय डे या passage of time के साथ depreciate नहीं होती है, even appreciate होती है. Okay, कोई भी person जो होगा कोई भी मैनपावर, कोई भी पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो टाइम जैसे टाइम पास कर जाएगा तो एक्सपीरियंस होता जाएगा, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती जाएगी. तो वो डेप्रिशिएट होने की बजाय मैनपावर एक ओनली ऐसा रिसोर्स है जो टाइम की पास होने के साथ साथ एप्रिशिएट होता है, ना कि डेप्रिशिएट. So this is the meaning of human resource. Now second word is management. So what is management? Management is an art of getting things done to others. So see, this is not easy task to done any work to the others. Okay, किसी भी काम को दूसरों के थ्रू करवाना is not the easy task. So management क्या है? मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है जिससे आप सीखते हैं कि आप कैसे दूसरों से अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग कैसे आप वर्क करवाएंगे, कैसे लोगों से अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग काम करेंगे. ओके, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट में आप क्या लोगों से आपको कैसे काम करवाना है उसकी एक आर्ट है मैनेजमेंट. So if we talk about whole HRM, then what will be the definition? It is a function performed in organization that facilitates the most effective use of
function, HRM is a function performed in organization that facilitate the most effective use of the people to achieve the organization and individual goals. So to achieve the organizational and individual goals, HRM is a function to perform in organization that facilitates the most effective use of their people or the employees in order to achieve organizational and individual goals. It is a management function that helps managers to recruit, select, train, develop manpower for organization. Also, HRM includes employee remuneration, motivation, and growth. So these activities, these functions are included in the HRM. What are these functions? So see, this is in HRM, you recruit the person or you recruit the employees. You select that select the employees. You train them to develop the manpower of the organization, and also you do you provide the remuneration or you work on the remuneration and the motivation and growth of the employees. Okay, you also work in HRM. You also the work on remuneration of employees and motivation of employees and growth for the employees. So basically, HRM is a management in which you take care of the employees. आपने पूरा take care करना है employees का, ताकि वो आपके objectives के according काम कर सके, उनको अच्छा working environment provide करवाना, उनको recruitment करना, selection करना, उनको train करना, training देना, उनको अच्छा environment provide करवाना, अच्छी remuneration provide करवाना, उनको motivated रखना, उनको growth में help करना. So ये सारी activities इसमें include होगी HRM. So अगर हम एक ये हमने जनरल डेफिनेशन पढ़ी, अगर हम एक टेक्निकल लैंग्वेज में अगर इसको डेफिनेशन पढ़े तो what is the definition? So human resource management is the function within an organization which focuses mainly on the recruitment of, management of, and providing guidelines to the manpower in the company. It is a function of company or organization which deals with the concerns that are related to the staff of the company in terms of hiring, compensation, performance, safety, wellness, benefits, and motivation. So all these works are will be included in the human resource management. Okay. Yes. Now let's talk about the scope of HRM. So what are the scopes of HRM? The scope of HRM is divided in three aspects. First is personal aspect, second is welfare aspect, and industrial relationship aspects. So these are three kind of aspects of the scope of the HRM. The personal aspect मतलब आप एक personal और अपने employees के लिए what you will do. Okay, what will you do? That will be included in personal aspect. तो आप अपने employees के लिए उनके recruitment के क्या करेंगे? That is all included in personal aspect. Employees के लिए नहीं, अपने organization की personal department. Personal department मतलब जो आपको human resources चाहिए. Personal का मतलब होता है basically human resources. तो जो भी human resources you are needed, तो उनके लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन के ध्यान रखना है कि कब कौन से डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट चलना है, सिलेक्शन चलना है, किसमें आपको वैकेंसी निकालनी है, कैसे मैन पावर की प्लानिंग करनी है. तो ऑल दीज विल बी इंक्लूडेड इन द पर्सनल एस्पेक्ट. नाउ सेकंड एस्पेक्ट इज वेलफेयर एस्पेक्ट एंड थर्ड इज वेलफेयर एस्पेक्ट्स में आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको क्या वर्क करना है कि कैसे आपके एम्प्लॉइज का वेलफेयर है. तो वेलफेयर में आपको ध्यान रखना है कि अपने जो भी आपके एम्प्लॉइज हैं उनकी वेलफेयर पे ध्यान रखना है. थर्ड इज इंडस्ट्री रिलेशनशिप एस्पेक्ट. तो आपके एम्प्लॉइज के आपकी इंडस्ट्री के साथ रिलेशनशिप अच्छे रहे, इसके ऊपर आपको ध्यान देना. ओके, तो फर्स्ट एस्पेक्ट इज पर्सनल एस्पेक्ट. सो इन पर्सनल एस्पेक्ट यू डू द फॉलोइंग काइंड ऑफ वर्क. फर्स्ट वर्क इज मैन पावर प्लानिंग. So what is exactly manpower planning? Let's see. Manpower planning is the process of estimating the optimum number of people required for the completing a project, task, or goal within time. Manpower planning includes parameters like number of personnel, different type of skills, time period, etc. तो manpower planning में आप क्या करोगे? एक human resource manager जो होगा, उसका क्या HR manager होगा, उसका क्या वर्क होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के इस डिपार्टमेंट को कब कितने किस टाइप के स्किल वाले एम्प्लॉइज चाहिए. दैट विल कॉल मैन पावर प्लानिंग. ये सब आप एक प्लान करके रखेंगे कि हम कब हमारे इस डिपार्टमेंट को, हमारे डिपार्टमेंट के किसी एक डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइजेशन में कुछ न्यू एम्प्लॉइज चाहिए, तो उनके लिए आप रिक्रूटमेंट कंडक्ट करवाएंगे. मैन पावर प्लानिंग करके रखेंगे किस टाइप के स्किल्स के आपको लोग चाहिए उस पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए. अब किस टाइप के लोग चाहिए, क्या हमें स्किल्स होनी चाहिए, क्या कितने नंबर ऑफ पर्सनल चाहिए, ताकि आप अपने
Then next is training and development. Now you have planned that हमको ये employees चाहिए, इस qualification के employees चाहिए, इतने number of employees चाहिए, so that in given time we can complete our project or we can achieve our goals or objectives. Okay. Now in training and development you will give your attention on the training on the development of the employees. तो जो भी आप employees को अपने यहाँ recruit करेंगे, जरूरी नहीं है उनको वो काम आता हो जो आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में करवाना है। और अगर आता भी हो तो आपको हो सकता है आपके काम करने का तरीका अलग हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में पहले काम करते हैं उसका तरीका डिफरेंट हो। So you will organize various trainings and development programs for these employees whom you are recruiting. The next is recruitment, selection, and placement. Then what will you do? आपने जब मैन पावर प्लानिंग करी, then you know after manpower planning that you need 3 or 4 employees. Then what will you do? You will issue any vacancy and you recruit the person, and then after the interview you will select the optimum person or the eligible person or the efficient person for your job or for your project, and you will place them. Okay, we will discuss recruitment, selection, placement in detail in later on. The next is layoff, recruitment, promotion and transfer. After that, आपको ये भी ध्यान रखना है पर्सनल एस्पेक्ट में कि आपको किसी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आपको ट्रांसफर तो नहीं करना है, किसी को प्रमोशन तो नहीं करना है. So all these work will be done under the personal aspect. Okay. Then remuneration, incentives and compensation. So you will take care of the remuneration of the employees and you will pay your attention on incentives and compensation. So you have to do these kind of works in the personal aspects. That a human resource manager should pay their attention on remuneration also. कि अगर आपका कोई भी एम्प्लॉय का रेमुनरेशन प्रॉपर नहीं होगा तो कोई भी एम्प्लॉय आपके यहाँ स्टे करना नहीं चाहेगा और रिटेंशन कर नहीं पाएंगे आप एम्प्लॉय को. ओके, कोई भी एम्प्लॉय आपके यहाँ वर्क करने के लिए अगर नहीं होगा, इंसेंटिव्स नहीं होगा. इंसेंटिव्स मतलब जो भी एक्स्ट्रा काम किया जाता है उनके लिए आपको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाना चाहिए. अगर आप इंसेंटिव नहीं प्रोवाइड करवाओगे तो कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा, जो उनको काम दिया जाएगा जितना उनका टारगेट होगा उतना काम करके दैट्स इट. देन कंपनसेशन मींस अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ हार्म हो जाता है तो उसके लिए आप उनको कंपनसेट करना चाहिए. कि अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई है या आपके यहाँ काम करके उनको कोई इंजरी हो गई है तो उसके लिए आप उनको कंपनसेशन देना चाहिए. All these work will be included in the personal aspect. Okay. Then next is welfare aspects. So in welfare aspects, you will do 3 kind of work. First is working condition, basic amenities and safety, and recreational activities. So working condition, this is your responsibility being an HR manager that you provide the proper working condition to the employees to work within an organization. So this is responsibility of the manager. This is key responsibility of HR manager to provide better working conditions to the employees so that they can do their work properly. Then basic amenities and safety. So in this heading, it means HR manager must provide the basic amenities to the employees and at the same time safety also. तो अगर उनको कोई इंजरी हो जाती है या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है या कोई आपकी फीमेल यहाँ वर्क करे, फीमेल एम्प्लॉय, तो उनको सेफ्टी प्रोवाइड करवाना, बेसिक एमिनिटीज मतलब उनको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना इज की रिस्पॉन्सिबिलिटी. Then next is recreation facilities. Recreation facilities is basically like आपको जैसे एक कोई भी एम्प्लॉय है तो एक सेम टाइप का वर्क करते करते कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा, उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज होने लगेगी. Then in that time you should pay attention on the recreation facility. Recreation facilities मतलब कुछ entertaining facilities conduct करवाना, facilities देना, like कुछ activities conduct करवाना, कोई entertainment वाली activities कंडक्ट करवाना. उसके अलावा बहुत सारे क्विज़ेस कंडक्ट करवाना. तो ऐसा कुछ वर्क करना सो दैट कि उनका दिमाग थोड़ा वर्क पे से हटकर वो अपने आप को फ्रेश फील कर सके. आफ्टर दैट एक्टिविटीज दे विल वर्क प्रॉपर्ली, कि तो वो प्रॉपर वर्क कर पाएंगे. So if we discuss recreation facility, stress and efficiency is inversely proportional. स्ट्रेस और एफिशिएंसी एक दूसरे को इनवर्स इम्पैक्ट करते हैं. अगर स्ट्रेस होगा तो एफिशिएंसी नहीं आएगी, और अगर आपको एफिशिएंसी चाहिए तो अ पर्सन मस्ट बी स्ट्रेसलेस. ओके, he or she should be fresh mind. The pressure faced by individual directly affects the efficiency. Organization gives recreational facilities to their employees. For this organization organize various entertainment activities for the employees to stress out the employees so that their efficiency
recreation facilities, and you should conduct some activities like entertainment activities like quiz and all these kind of activities you should conduct. Okay. Then next is industrial relationship aspects. So in this you will do these two kind of work. First is joint consultation. Joint consultation means कि आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉइज हैं उनकी आपको कोई भी आपके उनके लिए कोई डिसीजन ले रहे हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी बना रहे हैं, तो आप उन एम्प्लॉइज का भी पॉइंट ऑफ व्यू लें कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कैसे हमको उसके लिए स्ट्रैटेजी बना दीजिए, तो उसको बोलते हैं हम जॉइंट कंसल्टेशन. So let's see. Joint consultation is a process whereby an employee seeks the views, feelings, and ideas of the workers and their representatives prior to making any organizational decision. So before making any organizational decision, every organization decision, an employer should take the views and feelings and ideas of the workers or ideas of their representative while making any organizational decision. So this is called joint consultation. जब आप अपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन में अपने वर्कर्स का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, उनकी फीलिंग्स का एक तरीके से एडवाइस देते हैं, दैट इज कॉल्ड जॉइंट कंसल्टेशन. Then next is collective bargaining. What is collective bargaining? So let's see. An individual worker has to face many problems such as low wages, long hours of work, low incentives, and etc. These problems of an individual or few individuals cannot attract the attention of the employer because of their less bargaining power. Settling these disputes, an organization use collective bargaining method in which disputes are settled by the negotiating between the employer and employees or their trade unions. Collective bargaining is the source of solving problems of employees through the negotiation. So, see, collective bargaining is what? We sometimes workers face some problems like low wages, long hours of working, and low incentives. Even तो employees की wages कम होती है, working hours ज़्यादा होते हैं, या incentives बहुत कम होते हैं, basic incentives. Okay, so in that case, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कलेक्टिव बार्गेनिंग का अगर आप पॉलिसी है, तो एम्प्लॉयर इन चीजों के ऊपर ध्यान देगा. अदरवाइज अगर आपके यहाँ कलेक्टिव बार्गेनिंग की कोई भी पॉलिसी नहीं है, तो एम्प्लॉयर ध्यान ही नहीं देता है एम्प्लॉयज पे कि वो उनको क्या उनकी वेजेस कम है, उनके वर्किंग आवर्स ज्यादा हो रहे हैं, और इस वजह से जब एम्प्लॉयज को अटेंशन नहीं मिलता है, तो फिर एम्प्लॉयज क्या करते हैं और डीमोटिवेट होना स्टार्ट करते हैं, एफिशिएंसी उनकी डिक्रीज होती है. तो कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या प्रोसेस होता है कि आपकी जो भी लाइक आप अगर सैलरी डिसाइड करने जा रहे हैं, वर्किंग आवर्स डिसाइड करने जा रहे हैं किसी एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में कुछ डिस्कशन होंगे, कुछ सेटलमेंट्स होंगे, कुछ डिस्प्यूट्स होंगे, उसको सेटल करने के लिए कुछ नेगोशिएशन होंगे. फिर जैसे हम कोई भी चीज परचेज करने जाते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, वैसे ही जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में नेगोशिएशन होते हैं, मे बी वो वेजेस और वर्किंग आवर्स और इंसेंटिव्स, वेजेस के लिए या वर्किंग आवर्स के लिए, इंसेंटिव्स के लिए, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव बार्गेनिंग. कोई भी इश्यूज के लिए अगर आपका कोई भी इश्यूज है लाइक लो वेजेस, लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क और इंसेंटिव्स, इनसे रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, तो आपकी कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू आप उनको सॉल्व करें. देन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट. सो इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स, रिलेशन एस्पेक्ट्स में आपको क्या करना होता है कि आपको सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट, एम्प्लॉयज जो भी डिस्प्यूट्स लेकर आते हैं, आपको उनको सेटलमेंट करना होता है. एंड देन इज यूनियन मैनेजमेंट. यूनियन मैनेजमेंट से जब भी आपके यहाँ पे कोई भी न्यू एम्प्लॉयज रिक्रूट होते हैं, जब आप बहुत सारे एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, तो एक इसका यूनियन बनने लगता है, और वो यूनियन समटाइम्स अगेंस्ट चला जाता है ऑर्गेनाइजेशन. ओके, जब इसी वजह से स्ट्राइक्स वगैरह होती है ऑर्गेनाइजेशन की और बिजनेस में, तो यूनियन मैनेजमेंट आपको करके रखना है, सबको कैसे एक जगह बांध के रखना है. दिस इज द वर्क ऑफ द एचआर मैनेजर. So these are three kind of scopes under the HR. Okay, so I think that's all for today. In next lecture we will discuss objectives and functions of